Hello students. Today we are going to start a new chapter which is force and laws of motion. This is the first part of this chapter. In this video we will discuss about balanced and unbalanced forces and inertia and its relation with mass. In previous chapter we have learned that motion of an object in a straight line can be uniform or non-uniform. Now we will learn about what causes the motion, why does speed of an object changes with time, and do all the motion require a cause? Firstly, we will discuss about force. Force is an action which causes pull or push on an object. Pull means उसको खींचना, push means धक्का लगाना. So force is an action which can either cause pull or push. Force is the cause of motion. Force can bring the following changes. Firstly, force can move a stationary body. Stationary body means the body which is at rest. So अगर कोई body rest पर है तो और उसके ऊपर कोई external force apply होता है then it will start moving. Force can stop a moving body. अगर एक body move कर रही है और opposite direction से उसके ऊपर कोई force apply होता है then it will stop. Third, force can change the direction as well as speed of a moving body. Force जो है वो एक moving body की direction भी change कर सकता है और speed भी. Speed increase भी कर सकता है और decrease भी कर सकता है depending upon the direction of force. And last is force can change the shape as well as size of the body. If we stretch or compress a body, it will change the shape as well as size of the body. Next, we will discuss about balanced and unbalanced forces. Firstly, the balanced forces. Balanced forces, as the name suggests, are the forces acting on an object in opposite direction, but they are equal in magnitude. They are equal, that's why they are called balanced. So आप ये गेम देख रहे हो जिसमें रोप को दोनों साइड से खींचा जा रहा है और दोनों तरफ फोर्स कितना है 300 न्यूटन. तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट. दैट्स व्हाई these are the balanced forces. In case of balanced forces, the net effect produced is zero because the forces have equal magnitude in opposite direction. दोनों forces का magnitude same था लेकिन direction opposite थी इसलिए net effect produced is zero. Now, the balanced forces do not change. Firstly, state of rest. If a body is at rest and balanced forces are acting on it, then it will not start moving. Means अगर एक body rest पर है और उस पर balanced forces apply हो रहे हैं then it will not come into motion. वो body motion में नहीं आएगा because net effect produced by balanced forces is zero. Second, state of motion. It does not make a body in motion to come to rest. अगर एक body motion में है और उस पर balanced forces apply हो रहे हैं then it will not come to rest. Third is direction and speed of moving body. It does not allow a moving object to even change its direction or its speed because again we know that net effect produced by balanced forces is zero. Next is unbalanced forces. Unbalanced forces are the forces acting on an object in opposite direction but they are
अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो फोर्सेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, दैट्स वाई वो बैलेंस्ड नहीं होंगे. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड unbalanced forces. Now in case of balanced forces, the net effect produced was 0. But in case of unbalanced forces, they can cause a change in the state of rest or of uniform motion of a body. If an unbalanced force is applied on a moving object, then there will be a change in its speed or its direction, or it can be both. तो अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी मूविंग बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो या तो उसकी स्पीड चेंज होगी, या उसका डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों भी चेंज हो सकते हैं. और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, देन इट विल start moving. So it will cause a change in state of rest or in the uniform motion of a body. Next we will discuss about inertia. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in their state of rest or of uniform motion along a straight line. Now what does that mean? Inertia is the property of an object. किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? To resist a change. Resist मतलब रोकना, right? So to resist a change in its state of rest or of uniform motion, कि वो अपनी जो या तो रेस्ट की स्टेट या फिर मोशन की स्टेट में कोई भी चेंजेस को रेजिस्ट करता है. If an object is at rest, it remains at rest, and if it is moving, it tends to keep moving. This is the property of inertia. Now there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Now we will discuss all these three in detail. First, we will discuss the inertia of rest. It is the tendency of a body to oppose any change in its state of rest. For example, when we are sitting in a bus which is at rest, which is not moving, now when the bus suddenly starts moving, what will happen? The passengers in the bus fall in the backward direction. Why it happens? Because the lower part of our body is in contact with the bus. When the bus comes in motion, our lower part of the body also comes in motion, but the upper part of body is still at rest. That's why the upper part of body falls in the backward direction. Clear? जब हम एक बस में बैठे हैं और वो रेस्ट पर है, सडनली वो मूव करना स्टार्ट करती है. नाउ व्हाट विल हैपन? जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो तो बस के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही बस मोशन में आएगी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल आल्सो कम इन मोशन. लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में है. दैट्स वाई जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो पीछे की तरफ फॉल करता है. Our next example is a coin is placed on the top of cardboard which is placed over a glass. एक ग्लास लिया, उसके ऊपर a piece of cardboard रखा और उसके ऊपर एक coin. Now if we pull the cardboard quickly, the coin will fall into the glass because पहले coin भी रेस्ट पे था और cardboard भी रेस्ट पे था. जब हमने कार्डबोर्ड को पुल किया तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन अभी भी रेस्ट पे है. दैट्स वाई ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास. सेकंड इज द इनर्शिया ऑफ मोशन.
It is the tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion. For example, when the passengers are sitting in a bus which is moving, and when the bus suddenly stops, the passengers fall in the forward direction. Why? Because again the lower part of body is in contact with the bus. When the bus comes at rest, lower part of body also comes at rest, but the upper part of body is still in motion. That's why it falls in the forward direction. जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पढ़ा था, ऐसे ही इसमें है, क्योंकि हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी बस के कांटेक्ट में है. जब बस मूव कर रही है और एकदम से वो स्टॉप होती है, तो उसके साथ साथ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑल्सो कम्स एट रेस्ट, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी तो अभी भी मोशन में है. इसलिए जैसे ही बस एकदम से रुकती है, वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ एन एथलीट which continues running even after reaching the finish line. Why? Because of the inertia of motion. Athlete cannot stop immediately. वो एकदम से नहीं रुक सकता, इसलिए वो gradually, बहुत धीरे धीरे stop करता है and वो अपनी speed को reduce करता है. So these two are the examples of inertia of motion. Third is the inertia of direction. It is the tendency of a body to oppose any change in its direction of motion. When we travel by a motor car and if we make a sharp turn at high speed, we tend to get thrown on one side. जब हम एक कार में मूव कर रहे हैं और बहुत हाई स्पीड पर हैं और हम एक शार्प टर्न लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक तरफ को गिरने को हैं. वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम एक तरफ गिर जाएंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि वो डायरेक्शन में कोई भी चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है. क्यों? बिकॉज हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, और अगर हम एकदम से टर्न लेते हैं तो वो हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, राइट? So we feel like that our car is pushing on one side. Okay, why? Because जब unbalanced force is applied to change the direction of motion of motor car, it is clear कि अगर हमारी direction change हो रही है, that means हम पे unbalanced force लग रहा है, then we slip to one side of a seat due to inertia of direction. जब हम एकदम से टर्न लेते हैं तो सीट की एक तरफ हम स्लिप कर जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनर्शिया एंड मास. इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड. द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास. That means mass of an object is the measure of its inertia. Let us take an example. There are two balls, right? So what do you think? Which ball would require more force to move or slow down, and why? Of course, जो बड़ी ball है, the bigger ball, which is the bowling वाला ball, right? It will require more force to move or slow down because it has more mass and therefore more inertia. जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. इनर्शिया ज़्यादा मतलब वो अपने अंदर कोई भी चेंजेस को रेजिस्ट करेगा, राइट? सो मोर इज द मास, मोर विल बी द inertia. This is the relationship between inertia and mass. Next are the Newton's laws of motion. Newton formulated three fundamental laws of motion which govern the motion of an object. अगर हम
किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, then we require three fundamental laws of motion which are named after Sir Isaac Newton, and that's why these are called the Newton's law of motion. We will discuss these three laws as well as conservation of momentum in our next video. If you have any doubt regarding the topics we have discussed till now, you can ask in the comment section below. Thank you so much for watching this video.